और यार इस पे नहीं, वो जो मेरा 5.5 वाला है ना, वो लिंक ओपन करो। और यार इस पे नहीं, वो जो मेरा 5.5 वाला है ना, वो लिंक ओपन करो। और यार इस पे नहीं, वो जो मेरा 5.5 वाला है ना, वो लिंक ओपन करो। और यार इस पे नहीं, वो जो मेरा 5.5 वाला है ना, वो लिंक ओपन करो।
Hello, hello, hello. How are you guys? I can see five individuals have joined the stream. If you guys are hearing my voice loud and clear, please come in the comment box. And I would be really grateful if you give a small intro of yourself, one by one. Hello, hello, hello. How are you guys? I can see five individuals have joined the stream. If you guys are hearing my voice loud and clear, please come in the comment. All the busy individuals are uh, three watching now, two have disappeared. It's 5:30 sharp and we are live. Who all are watching? It would be more of an interactive session uh, alongside with the teaching point of view, and I would be getting your ideas and suggestions, and I'll tell you what I think about the running market. I don't say I am a pro in this field, but it's been a little more than a decade when I started this thing, and since then I am into it along with a few of my friends. And since then, we have been creating demo accounts, real accounts, booking some profits, blowing our accounts. And it's a long journey, and still we think we consider ourselves uh, students, not the masters or teachers. Who else is here? Who is in this forex or crypto or commodities or indices? This trade business. Okay, let's wait for people to join the stream. Okay, Euro USD is heading again. Bullish scenario. This is where we enter. Profit would be this liquidity. And our stop loss would be here. Okay, this is Euro USD, and we have entered at 15304.
Guys, let me make this thing clear to you. uh, I'm not getting into the real trade here. This is my first live interactive session, so okay, we are in Euro USD. If we see the market has touched its high for today, it rejected from 15609, tried to build up the scenario on the buy side, pulled down, came here and pulled down, and now again the market is moving down on 5 minutes. And what about on 15 minutes? As the market was bullish since the very first candle of the today's session from the Asian session. If we go down, probably this would be somewhere here. Yes. Okay. The market started from this candle. This is the first 15-minute candle, and since then the market is bullish. This is how the market has reacted. And if we go and we see the dollar index, the, now the dollar index, this is 20th of April. We had a gap down here. Gap down means the market is in bearish scenario, uh, and the market might move up and fill this gap, but it is not necessarily required for the market to fill the gap uh, in the same day or in the same month. The market might come up and fill the gap. The market may not come at this point and fill this gap. But for now, the dollar index is rising
although there is bank holiday in European countries, most of the European countries, or probably in all the European countries, we can wait for the dollars index to come up to 98.334, or even if we see here there is a small little 5 minutes order block here, and the market has started reacting from this place. Let's see how it goes. If we come on the other GPJP, GBPJP rising from this level again. Previously it was a resistance, and this level has become a support now, and most probably the market is trying to hunt this liquidity, all the liquidity, and by close near to 88.53, or it might go a little above than that and fill this gap, the gap here. The market has been reacting from this place very frequently today. If you see all the rejections here, closed above, moved down, and again reacted from the support, and now market is trying to hit this level once again. I hope I'm audible to all of you. Okay, who else is watching? It's Naveed, I guess, and Harim Imam. If we see at, okay, so now the market has started reacting from this place once again. If we go on a higher time frame of 1 hour, let me remove these drawings to make it more clear for you guys. It's a little messy. Let me hide these indicators. Okay. If you guys see, the market is still trying to be bullish from this side. This was a bullish engulfing at 1 hour. Market tried to come down, could not do so. Reacted from the support, and it's 188.495, and still trying to be bullish. If we see at the weekly time frame, the market is bullish, I guess. It's a messy chart. I've made something for myself. If this is the low, the market came down, could not break the low, and again move up. GBJPY is uh, bearish in short term. On higher time frames, it's bullish.
So if you have a account and it's not funded, it's your own account, you have some bucks in it, you can go long with some small trades like micro lots. You can go long from this place. The stop loss would be a little heavy. It won't affect you much if you put your stop loss here at 180 330 or a little below than that, or 179 800, and you go long till this place. It's 199 600, or if you can hold, you can hold it 207, but it would take a little long. I can see some more individuals have joined the stream. I hope the chat column is available with you. Uh, who all is there? Who all are there? Uh, I would appreciate if I can get some intro from your side. Actually, this is my first live stream, so I'm not that pro in it. The people are coming and going back. I guess my face is not visible. That's why people are not interested in the stream. If you see on the 15 minutes time frame, I mostly trade this pair, GBJPY. What I see in this pair is this pair moves a little faster than the other pairs. Uh, if you have ever noticed, GBJPY daily moves almost 700 800 points to 1500, or at time 2000 2500 points on the bull side, and on the same day it would hit the same many points towards the bear side. So you have a lot to do in this bear in one single day. If you mark your key levels carefully, and you patiently wait for the candles to come up to those levels and react from those levels, you can book some profit in this pair very easily. I would suggest don't go greedy. Your aim must be, we are not the institutions or the bankers or the hedge fund companies. We are retailers, we have small accounts. Uh, Most of us are working on the prop fund accounts. So I would suggest, uh, but for the better management of your accounts, the risk and reward ratio and the lot size and booking of profit as well. If you are booking profit equivalent to 8 to 10 pips a day, and you are safely managing your account, I guess that's more than enough for someone who has a job or a small business or someone who is a student. If you are getting 8 to 10 pips a day, I guess that's more than enough. We would start uh, this charting thing and other things. I am just waiting for people to join the live stream. I don't see much of individuals there. So this is the first live stream from this channel.
So I understand it would take a little time. So Shaiza has joined, Bilal, Harim Imam, Naveed. Okay, let's see who else is coming and joining this live stream. I guess if we get 15 to 20 individuals today, we would start putting our efforts on our charts. Till then, we can have some hello hi with our viewers. Okay, so as expected, came a little low. Now, this is the temporary support that has been created by the pair. Let's see if the price respect this level. If this happens, it would touch 188, 850, 55. And if we see a candle close above this level with a good volume, that would take this market, the GBJPY market, to the 188, 980 level. I guess it's going to happen today. This pair moves a lot. This pair moves a lot in one single day. This is the beauty of this pair. I guess I'm okay. So who all are watching this stream right now? Hello, Omar Rajput. Where are you from, brother? And what do you do? I mean to ask, are you a trader or a part-time trader, or you are here just to have some chit chat? जैसे उर्दू समझ आती है वो उर्दू में भी लिख सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें. This is not mandatory that you have to write here in English.
We are still waiting for participants. Or as I've already said, we can start with the charting business uh, after we have 15 or 20 individuals. We are still short of, I guess, 10 more. By that time, the market is open. I'm available. If you guys are not busy somewhere else, you can sit here. We can have some chat. Or if anyone out of you is in this trading business, you can share your thoughts here. Uh, or if anybody has a YouTube channel, you want to come live with me, you are more than welcome. We can have a live session together. That would be much better than what we are having right now. It's been 36 minutes since the stream has started, and we are still waiting for. So GBJPY reacted from this level of 495. Now from last 20 minutes, a little more than 20 minutes, the market is trying to move up, and once it has tried to break below this 670 level, and now if we see at the volume is very important. See this candle, the volume is huge here. See, the next candle is again a bullish. Okay, turned red. Let's see what happens. The volume speaks a lot about the candle and for the next candle. If you see here, there is a big green candle here, a little rejection from the upside, and if you see on the volume bar is not that large. You see the size of the candle and size of the volume bar, and then you see the size of this red candle and the size of this volume bar. If you compare these size of these two bars and these two volume bars, this bar and the low volume, this shows that next candle may be a bearish candle. And if you see here, the volume is low, the candle is small, pretty small. So there is still sort of indecisiveness in the market. This pair gave a very good chance in the morning, especially in the entire Asian session. If you see here, this was the first candle made today. There was a gap down. This candle was made at the very start. This is 5 minute candle, and if you mark the wick of this candle, there's huge liquidity here. If you see, the market came in this level once,
twice, thrice, you see, three times. If not four, then three times. Like you could have entered here till this level. You could have booked 28 pips, and on the second entry, you could have booked 60 plus pips, and after the third entry, again 28 pips. If you are making 20-30 pips a day, it's a good amount of pips you are getting in a day. I'm from Pakistan and not a trader, but from the last few months I started to learn trading skills. Okay, brother, so few more have joined us. Okay, it's not that easy and it's not that difficult. There are few certain things those are important in this trading business. You must have learned about the candlesticks pattern, their shapes, their sizes, volume, etc. etc. If you guys are interested and you want me to start from the very beginning, we can do so. Or if you think that is not necessary for you and you know a little or a lot about it, then we can straight away start from the strategies or from the use of indicators, key levels, and in simple words, we can start from the charting business. You guys are welcome to share your minds here. It's not necessary that you have to learn from me. I am also here to learn from you guys. We retailers, we are small, petty little creatures in this forex trading world. What we have to do is we have to ride the crocodile, or we have to get hold of the tail of those big crocodiles and this big giant pond or river, a river of trading. You get a little pull, book your profit, and move out of the market. If you are 200% sure that the market is going in the direction you have anticipated or you have worked out, then you are more than welcome. You guys can tell me how you guys want me to start this trading business here. You guys want to learn about candlesticks, you guys want to learn about the key levels or the support resistance levels, or you guys just want me to uh, do my working on the chart and say hello hi to you, and you want to see what I'm doing and you want to copy paste it and book your profits or book your losses alongside with me. Please share your views. You can share your views. I'm all my eyes.
So GPJP sort of consolidation here, still above that level of 88,665. If we see the volume bars are pretty much the same. Buyers are not in control, the sellers are not in control. And if we see what time is left in opening of, okay, so it's 904, and we are still left with 26 more minutes. The opening of New York Stock Exchange, we may see a little up and down before the New York market is open. This is the only market that makes some good and bad. The easiest way to book our profits that I have learned so far, or my you can say strategy, is the easiest time to book profit is Asian session and the very start of London session. At the start of this New York session, the market is very volatile. You can book your profits easily, you can blow your accounts very easily if you are not watchful of the news and the talks later in the evening or in the morning during the New York session, because it's 6:06 in the evening in Pakistan, and it's about 9:06 in New York. Okay, no, we don't want this chat GPT. Okay. Okay, I would mention here there is a little delay in what I'm saying right now and what you are hearing on the other end. If I'm not wrong, there is a 10 to 15-second delay because of the stream thing. Basically, I missed two chances today. I was a little busy somewhere else. I woke up early in the morning. I guess it was 5 a.m. and I got hold of a level in GBJPY. I was in profit, moved my SL to the break even, got busy somewhere, did not stop, rather could not stop my trade manually. It did not hit my TP, but it rerouted its way and route. I was making, I guess it was around 30 to 40 bucks, and from there the market made a turn, hit my stop loss, and then it went above, and I gave it a second chance.
I entered in another trade, and because of my laziness, if you read the description of my channel, I have mentioned that I'm a lazy cow. If you are a lazy cow and you are like me, you get distracted easily, then this market can eat you. This market can eat you in a day. Then I tried my luck in Euro USD. Again, the same thing happened. I was getting more than 300 bucks, left it. The market moved down, hit my stop loss. Although I always move my stop loss to the break even whenever my trades go in profit. I did not book a loss, but I lost all the money that was made. Okay, now we can see a red candle, a healthy red candle. Let's see what the market is doing right now. Is the market reacting? The market is slow. I guess it's because of the bank holiday in most of the European countries. If you could deliver this lecture in Urdu or Hindi, it would be very useful for everyone. Okay, ठीक हो गया. तो उर्दू हिंदी में हिंदी कुछ ना कुछ उर्दू से मिलती है. उर्दू में कर लेते हैं इसे. जिसे हिंदी समझ आती है वो भी समझ लेगा, और जिसे उर्दू समझ आती है वो तो समझ ही लेगा. तो नाइटमेयर, नाइटमेयर ब्रदर, वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हो, इफ आई मे आस्क? आई होप किसी को ये चीज़ जो है वो बुरी नहीं लग रही होगी अगर मैं किसी से ये पूछ लूँ कि वो कहाँ से है. जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि this would be more of an interactive session and less of me delivering the lectures here. मतलब ये हमारा एक कुछ जिस तरह होता है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मिल के डिस्कशन करेंगे. डिस्कशन कर सकते हैं, आप अपने आइडियाज़ मुझे दे सकते हो, मैं अपने आइडियाज़ आपको दूंगा. आपको जहाँ पे फील होता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, आप बिल्कुल ब्लंट होके मुझे बता सकते हैं. और जहाँ पे आपको शक है कि मैं ठीक नहीं हूँ और आप भी ठीक हो सकते हैं और नहीं हो सकते, तो वो बात की जा सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है. और साथ साथ सामने वाले को ये गाइड करना बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप शक में होते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है जिस तरीके से आप समझ रहे हैं, या नहीं हो सकती है, ये बताना ज़रूरी होता है कि आपकी वजह से कोई एक दूसरा शख्स जो है उसका नुकसान ना हो. इसलिए कि ये मार्केट जो है ना, ये बड़ी बेरहम है. ये अगर कोई ये काम कर रहा है या करता रहा है, उसे पता होगा कि दिस इज़ द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड. ये दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार जो है वो फॉरेक्स मार्केट का है. इस एक दिन के मूव्स इनके जो हैं वो $7 ट्रिलियन से ऊपर के हैं.
तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि $7 ट्रिलियन से ज़्यादा की मूव मार्केट की जो है ट्रेडिंग जो है, उसमें आप, मैं या हम जैसे और लोग जिनको मार्केट की ज़ुबान में, ट्रेडिंग की ज़ुबान में रिटेलर्स कहते हैं, हम कहाँ फॉल करते हैं। इफ़ वी थिंक कि वी आर बिग ट्रेडर्स, तो मेरे भाई इस तरह नहीं है। हम में से बहुत से लोग, जब मैंने भी शुरू किया है तो हम ये जो एड्स आ रहे होते हैं मुख्तलिफ जो ना ऐप्स वगैरह के सिलसिले में कि जी ऑक्टा से काम शुरू करें तो फ्लां से करें तो एक्सनेस से करें, $1 से हो सकता है और $10 से हो सकता है, तो 1 और $10 से आप जो वो टाइम पास कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मैं उसे ट्रेडिंग नहीं कहूँगा, ऑल्दो आई एम दी सेम। जिसने बैक इन 2012 जो है वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आई ओपनड एन अकाउंट ऑफ 40,000 PKR, 40,000 पाकिस्तानी रुपीस जो हैं, उनसे मैंने अपना पहला अकाउंट जो शुरू किया था। और उस वक्त जो है ये चीज़ें इतनी डेवलप नहीं थी जिस तरह ये इंटरनेट आपको आज मिल रहा है, आपको लाइव स्ट्रीम्स मिल रही हैं, आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स जो मिल रहे हैं। तो उस वक्त ये फील होता था कि एक ब्रैकेट के अंदर ये मार्केट मूव करती है, कि ये 1 से शुरू होगी और 4 तक जाएगी और 4 से फिर ये 1 तक आएगी। तो बस हमने इस 1 से 4 के बीच में जो है ना वो बाय एंड सेल करना है। और ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं और बाकी चीज़ें क्या होती हैं, इनका तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं हमें पता था। तो हमारा बस ये था कि तुक्के पे चलते थे, कि बस देख लिया मार्केट जो है ना पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करती है, तो जैसे ही वो पॉइंट ए पे आती है तो बाय कर दिया, वो थोड़ा सा प्रॉफिट आना शुरू हुआ तो फ़ौरन दिल में और दिमाग में एक चीज़ आती थी, वो हो ये तो प्रॉफिट आना शुरू हो गया, एक मरतबा और जो है ना एक ट्रेड खोल देते हैं बाय की या सेल की, जिस साइड पे प्रॉफिट मिल रहा है तो वो ट्रेड खोल देते हैं। अब वो ट्रेड खोलते हैं तो वो कहीं आपने बीच में खोली होती है, मार्केट जिस तरह वो हार्ट बीट होती है उस पैटर्न में चलती है, बिल्कुल ऊपर नहीं जाती, बिल्कुल नीचे नहीं जाती। तो वो एक छोटा सा पुल बैक लेती है, तो जिसके पास थोड़ी सी अमाउंट होती है वो समझता है कि पता नहीं शायद मैं डूबने वाला हूँ, वो फ़ौरन से ट्रेड बंद कर देता है मैनुअली जो है। फिर आपने एसएल्स नहीं लगाए होते, आपको लगता है खैर है नीचे चली जाएगी, वापस भी तो आ जाएगी। तो ये ऐसा ही है, मार्केट नीचे जाएगी वापस बिल्कुल आएगी, लेकिन डिपेंड करता है कि वो वापस कब आएगी और वो कितना नीचे या कितना ऊपर जाएगी आपकी स्टडी के अगेंस्ट जो है। अगर तो आपकी ट्रेड जो है वो छोटी है, लॉट साइज छोटा है और आपको पता है कि बैकअप में आपके पास जो है वो लेट्स से जी $20,000 पड़ा हुआ है और आपने .1 की लॉट खोल दी है, वो 1,000 2,000 4,000 पॉइंट भी नीचे चली जाएगी, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके पास पड़े हुए $100 हैं और आपने उसमें जो है ना वो 0.01 की 3-4 लॉट्स खोल दी हैं, तो वो चीज़ रिस्की हो जाती है। आप जो 6 महीने भी वेट कर सकते हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि सबसे ज़्यादा मेरी जो एक ट्रेड चली है, प्रॉब्ली इट वाज मोर देन 40 डेज, और उसका मुझे फ़ायदा इसलिए हो गया कि लॉट साइज़ जो है वो अकाउंट साइज़ को देखते हुए रखा गया था। गोल्ड में ली थी वो ट्रेड मैंने, और 40 डेज से ज़्यादा चली। आई क्लोज दैट ट्रेड इन प्रॉफिट, और वो ली भी बिल्कुल वो हसल बसल वाली सिचुएशन में थी कि आप बगैर मार्केट को स्टडी किए हुए, आंख खुली आपकी और बस आपने एक मरतबा जो है ना वो मोबाइल पे जो है ना वो देखा चार्ट और मार्केट में घुस गया। एक तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हूसोएवर इज इनटू दिस ट्रेडिंग बिजनेस, मोबाइल पे ट्रेडिंग करना छोड़ दें।
मोबाइल को साइड पे रख दिया करें, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसके ऊपर काम करें। मोबाइल पे से तो मैं कहूँगा ये ऐप ही डिलीट कर दें अगर आपके पास है कोई, इस पर लैपटॉप पे काम करें। ये जो कहना है कि जी मैं ऑन दी मूव होता हूँ, ऑन दी गो होता हूँ या होती हूँ, तो उसे आप रहने दें। मोबाइल पे काम करना बंद करें और लैपटॉप डेस्कटॉप पे सी द मार्केट हैज रिएक्टेड नाउ। Small candle with large volume. The next candle is red now. We go on 4 hour. Okay, 4 hour पे हमारे पास शॉर्ट टर्म ट्रेंड वाली ही कैंडल हमारी जो अभी तक बन रही है। Alright, buyers have started this place. Buyers की मेरे ख्याल में अंदर आके पास हो गई है। इसको खत्म करते हैं, चार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। मार्केट की एक और चीज़ है, अगर आप लोगों ने नोटिस की है कभी, काफ़ी मरतबा मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करती है जैसे आप किसी को कहें कि वो एक डायरेक्शन में भागना शुरू करे तो वो शुरू में तेज़ भागता है। या आप इस तरह कह लें कि आपने एक बॉल ली है, बॉल लेके आपने आसमान की तरफ उछाल दी है, एक टाइम तक तो वो तेज़ जाएगी। जब वो अपने विंटेज पॉइंट पे या अपनी पीक के पास पहुंच जाती है या पहुंचने वाली होती है, रादर आई वुड से पहुंचने वाली होती है, तो उसका मोमेंटम जो है वो स्लो हो जाता है। मोमेंटम उसका स्लो हो जाता है, फिर एक पॉइंट पे वो रुक जाती है और वहां से वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। नीचे गिरना मीन्स कि जहाँ से वो गई थी वो वहां पे वापस आना शुरू हो जाती है। अगर आप कभी नोटिस करें तो ये मार्केट का भी बिहेवियर काफ़ी मरतबा इसी तरह होता है कि अगर सुबह से मार्केट जो है वो बुलिश है, दिन में भी कहीं वो ऑल्दो बेयर और बुल्स दोनों के मूव्स चल रहे होते हैं, मैं ओवरऑल एक ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, तो दरमियान में कहीं आगे मार्केट जो है वो एक और डायरेक्शन पकड़ती है। अगर वो शुरू में बुलिश थी तो दरमियान में वो कहीं बेरिश होगी, और वो दरमियान में अगर बेरिश हुई है तो वो जब आप समझ लें कि लंदन क्लोज हो जाती है या लंदन की क्लोजिंग का टाइम करीब होता है या न्यूयॉर्क क्लोज होने वाली होती है, उस टाइम के करीब आके मार्केट फिर दोबारा जो है वो बुलिश ही होगी। ये हमेशा नहीं होता लेकिन ये काफ़ी मर्तबा होता है। इसको ज़रा आप अपने पास इस पॉइंट को नोट कर लें, ऑब्जर्व कीजिएगा मार्केट को। तो ये भी एक बड़ा अच्छा चांस होता है कि आपने सुबह भी मार्केट ऑब्जर्व की, आपने दिन में भी ऑब्जर्व की, वो पहले बुलिश थी फिर वो बेरिश हुई, आपने लेवल्स उसके मार्क कर लिए। अब आप 2-4 मिनट के अंदर अंदर बैठ के देखते हैं, आपने देख लिया कि आपके लेवल्स के पास पहुंची हुई है मार्केट, एंड यू नो कि अब मार्केट जो है ये बुलिश फिर बेरिश, अब फिर बुलिश होने के चांसेस हैं, इसके टॉप पे है, टॉप जितना इसने आज हिट करना था या लो पे है जितना हिट करना था वो कर लिया है। अब ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में साइंस इसने शो कर दिए हैं, वॉल्यूम जो है वो गिरता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है उस तरह की कैंडल का। तो आप वहाँ से जो है वो 3-4 पिप 5-6 पिप की जो है एक छोटे टाइम फ्रेम में बैठ के जो मूव पकड़ सकते हैं इसकी। मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं, इंशाल्लाह आइंदा जो भी हमारा सेशन होगा उसके अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता। आज मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है कि इस तरह लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, नहीं की कभी, बस बैठ के अपना काम जो देख रहे होते हैं और कुछ दोस्त अहबाब हैं जो साथ मिल के हम ये चीज़ सारी जो देखते हैं। आज तो वो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, मेरा भी ऑल ऑफ अ सडन जो है वो प्लान बना और हमारे इधर पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से जो है वो कल शाम में रादर रात में जो है वो ये प्लान बना करते हैं। फिर आज बाकी सारी
जो आपके दिन की हसल बसल होती है उसमें बिजी रहे। तो इंशाल्लाह अगर कल लाइव आते हैं तो कल, नहीं तो जब भी नेक्स्ट टाइम लाइव आए, मोस्ट ऑफली कल, कल नहीं तो परसों, तो आई मेक श्योर के हम चारों में से एटलीस्ट दो या तीन तो अवेलेबल हों, ताकि सबका जो एक्सपीरियंस है उससे आप लोगों को फ़ायदा हो, फिर आप लोग जो चीज़ बीच में अपनी शेयर करते हैं उससे हमें फ़ायदा हो। ज़्यादातर जो लाइव आ रहे होते हैं उनका होता है कि वो आपको दिखा रहे होते हैं कि जी इस लेवल से एंटर हो जाओ, इस लेवल पे एग्जिट कर लो। लाइव अपनी ट्रेड्स जो हैं वो बहुत कम लोग दिखाते हैं। तो हम इसके अंदर जो है वो जब चार्ट्स पे काम कर रहे होंगे और लाइव अपने रियल अकाउंट्स पे बीच में ट्रेड नहीं एंटर हो रहे होंगे, कर रहे होंगे, तो वो भी हम आपको टाइमली बताएंगे। और जब रियल अकाउंट्स के ऊपर एंटर करेंगे ट्रेड्स में, तो वो भी हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। तो अगर कोई उसे देख के फॉलो करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसमें ये याद रहे कि ये किसी किस्म की ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। रिस्क इस मार्केट में हमेशा रहता है, तो आपने सोच समझ के डिसीजन लेना कि अगर फ़ायदा हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है। यू माइट बुक योर प्रॉफिट और यू माइट ब्लो अप योर अकाउंट, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एम, लेकिन ये है कि जो होगा उसमें हम आपके साथ होंगे। अकाउंट्स जो हैं इस चीज़ की सिखाई में बहुत ग्लो होते हैं। आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि आप डेमो अकाउंट पे काम करते रहेंगे और फिर आप जो है ना एक दिन रियल मार्केट में एंटर होंगे। ये आपको फील नहीं होता। जिस टाइम पे आपको रियल अकाउंट लेके एंटर होना चाहिए, आप उससे बहुत पहले एंटर हो चुके होते हैं रियल अकाउंट पे। ये मार्केट ऐसी है। who all are watching this stream live? Okay. Euro USD. So जी 2 minutes and 50 more seconds are left in closing. And if we see here, this it has, अगर तो ये से नीचे क्लोज होती है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कायम रहता है, तो फुल बैक के ऊपर यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ली जा सकती है। और अगर ये खुद एक फुल बैक है जो कि लग नहीं रहा, रीजन बीइंग मार्केट रिजेक्ट होती रही है यहाँ से। 15 मिनट्स की ही अगर हम बात करें तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे पुल बैक अगर मिलता है तो एंट्री ली जा सकती है। इससे छोटे टाइम फ्रेम में हम आते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में आए हैं तो यू कैन सी इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो कर दिया यहाँ पे। दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है 5 मिनट्स पे। ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो हमें ऑर्डर ब्लॉक कहाँ मिल रहा है, उसके करीब ही है मार्केट। फिर एक ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप इधर अवेलेबल है 5 मिनट पे। हम इसको स्विच करते हैं 1 पे।
ओके, यहाँ से अगर मार्केट की शेप देखें, मार्केट की शेप आपको बहुत कुछ खुद बता देती है। यहाँ से रिजेक्ट हुई, आप इसको कह लें कि दोबारा एक ट्राई की अपर साइड पे, या एक फेक मूव दिया, रिजेक्ट हुई दोबारा। ये सारा आपके पास सिनेरियो जो है, दिस वाज अगेन ए पुल बैक, अगेन ए पुल बैक, अगेन ए पुल बैक, एंड हियर इट गोज। तो आप इसमें इजीली जो है मार्केट की शेप आपको जो है ना वो कई मरतबा बहुत कुछ बता देती है। बहुत बड़ी मूव थी 54 पिप्स। यहाँ से भी देखें इस पुल बैक से 28 पिप्स। हम इस पेयर के ऊपर एक्चुअली आए नहीं, स्टिल इट्स गोइंग डाउन। 36 पिप से ऊपर की मूव ये है। तो बस वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन के चक्कर में मेरे हाथ से भी निकल गई ये ट्रेड्स जो है। अदरवाइज आई वुड हैव लव टू एंटर हियर एट दिस प्लेस। ये जो लेवल बन रहा है, यहाँ से अगर हम देखें रफली भी, अगर हम फिप्स को अप्लाई करें, ये देखें ये 618 के लेवल से जो है, जिनको हम प्रीमियम्स कहते हैं, वहां से इसने वापस जो है नीचे मूव किया। लेकिन इसका कोई गम या दुख नहीं है, मार्केट है, बार बार किसी एक लेवल पे आती है फिर दूसरे लेवल पे मूव करती है। ये तो मार्केट में चलता रहता है। आज आपसे ट्रेड मिस हो गई है, आप कल पकड़ लेंगे, कल मिस हो गई है आप परसों पकड़ लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। तो इस चीज़ को सोचते हुए फ़ौरन से ये कर देना कि बस अभी मार्केट में घुस जाओ, ये बड़ा गलत डिसीजन है। अब देखें, आप लोगों के साथ बातचीत करते करते मुझसे भी ये मार्केट की मूव जो है ये मिस हुई है। नो इश्यूज, कल फिर किसी न किसी एक पेयर में मार्केट आपको जो है ना इस तरह का मूव एक दे देगी, जहाँ से आप कुछ ना कुछ अपने पेप्स जो है वो बुक कर लेंगे। लाइव कौन कौन है जो अभी स्ट्रीम देख रहा है?
ये 20 पिप्स की मूव है जो अभी पकड़ी जा सकती है। बिल्कुल छोटी सी एक ट्रेड जो है, अगर ये इस लेवल को रिजेक्ट करती है कैंडल जो है, लेकिन अगर आप यहाँ से भी एंटर होते हैं तो छोटा सा इसका सेल है। मार्केट एग्जीक्यूशन से आप इसमें एंटर करें। और हाफ प्रॉफिट अपना इस लेवल पे बुक करें 14,983 पे। बाकी हाफ अपना जो है उसको ऊपर से ब्रेक इवन करके और नीचे आने का वेट करें। ओके, आई गेस हाफ माय ऑडियंस हैज लेफ्ट। तो इतनी खास तो है नहीं आज इस पहली स्ट्रीम में, लेकिन जो है उसमें से कोई आदमी तो शायद निकल गई है। क्रिप्टो में कौन है जो काम करता है यहाँ पे? Okay जी, 3 watching now। अगर 3 में all are watching now।
Okay जी, who all are live right now with us? कौन कौन है जो इस वक्त हमें देख रहा है? वो देख तो नहीं रहा हमें, जो इस स्ट्रीम को लाइव देख रहा है। चैट सेक्शन में अगर आप में से जो भी लाइव हैं वो लिखते हैं कि नवीद, where are you from? You have written your name in either in Arabic or Persian. I'm not sure. या आप पाकिस्तान से हो या इंडिया से? Where are you from? उमर ने शेयर किया है जी, उमर पाकिस्तान से हैं। फिर उसके बाद नाइटमेयर का नहीं पता कि ये कहाँ से है। नाइटमेयर, वेयर आर यू फ्रॉम? और कौन कौन है इधर? हरीम इमाम, ओके, वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज वन ऑफ माय पार्टनर, माय फ्रेंड, डॉक्टर साहब, who is not only curing the humanity but is also a trader. Hi, Saira Shahir. Saira Shahir, where are you from and what do you do? Are you a trader? ये चीज़ बड़ी यहाँ पे थोड़ी सी मिक्स एंड मैच चल रही है। ये पता नहीं है कि कौन कहाँ से है और किसे कौन सी ज़ुबान समझ में आती है। सारे उर्दू समझ लेते हैं या जो टूटी फूटी अंग्रेज़ी यहाँ पे बोली जा रही है वो किसी को समझ आ रही है। Naveed was the first one. I hope I am pronouncing your name correctly. Naved or Naveed. He was the first one who entered in the chat, and I guess he's the first one who left the chat. If he's a trader, he must be busy with the market. Okay. So a huge pullback. And we see a lot of what the DXY is doing here. Still okay. DXY is rising on 1 hour and trying to rise on 4 hour, but on 15 minutes. Did it do the breakout? I guess so, not that heavily, but it did a little moved out of this place, this level, ejected from the previous level. Now that is not that good. So I would say it was a sort of retracement in the index level.
is high and today is low. It's still far below 382 level of Fibs. And what GBP USD is doing. Moved up, came down, moved up, came down. I guess the market is not that reactive because of this. New Zealand, bank holiday, Australians enjoying the bank holiday, yen doing its business, franc holiday, French bank, German bank, Italian bank, Great Britain bank, all on holiday. Goolsby's Peak FOMC member, you can check the time, but news is not of that importance. The next CB leading index again, a routine thing, IMF meeting, not of use. And for tomorrow, we have a medium impact news for Euro and a medium impact news for USD. Apart from that, we do not have any worthwhile thing in the calendar for tomorrow as well. Okay, from Pakistan, trying to learning. ठीक है, तो आप क्रिप्टो में काम करते हैं या फॉरेक्स में करते हैं, इंडिसेस में करते हैं, किस में करते हैं? All are pretty much the same, लेकिन फिर भी okay. Let's see what the market is doing right now. इसमें कुछ गड़बड़ हैं, पुरानी मार्किंग्स हैं. So we come on this line chart, moved up, came down. The market is trying to grab this level of 189 100. 189 100 पिछले कुछ दिन की resistance रही है. If you see here, see, this is what I was telling you. ये जो लेवल है 189 100 का, ये पीछे कुछ दिन इसकी रेजिस्टेंस के तौर पे चलता रहा. और मार्केट अब भी अगर आप देखें तो इसी लेवल को जो है टच करने की कोशिश करती रही है. नीचे अगर देखें तो सवाए इस पैच के आपको वॉल्यूम भी इतना खास नहीं मिलेगा. तो चाहे बुल्स हैं या बेयर हैं, उसी हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट बस एक छोटी रेंज में आके कंसोलिडेट करती है, फिर ऊपर या नीचे मूव करती है. एंड नाउ इट्स डूइंग द सेम. ऑब्जर्वेंट रह के इसको देखा जाए तो मे बी कल भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन हो मार्केट की, लेकिन लॉन्ग रन में मार्केट इज बुलिश. GBP JPY in long run is bullish. See,
This is the high and the low, previous low, previous low। अभी तो बहुत गेम पड़ी हुई है। अभी तो ये इसने यहाँ पे इक्वल लो बना दिया हुआ है, मार्केट ने ये वीकली के ऊपर इक्वल लो है। दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट। इफ आई जूम इट अ लिटिल, अगर ये आज भी डेली कैंडल इससे ऊपर क्लोज अपनी करती है तो डबल बॉटम ही अपना बना चुकी है। Here, this is a double bottom। इसी को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखें, एक बार, दो बार और फिर ऊपर, छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े से छोटे टाइम फ्रेम या छोटे से बड़े टाइम फ्रेम पे आते हुए कंफ्यूज नहीं होना है कि जी वो तो 2 मरतबा उसने डबल बॉटम उधर किया है, उसको नीचे क्रॉस नहीं किया और यहाँ पे जो है ये क्रॉस कर गई है। तो इसमें एक चीज़ है कि अगर आप इधर देखें तो ये छोटी कैंडल्स हैं। वीकली में ये है कि ये छोटी कैंडल सारी मिलके फिर एक कैंडल बना रही है। 5 दिन, जो 5 आपके बिजनेस डेज हैं, उनकी कैंडल्स मिलके एक कैंडल बनाती हैं। अब वो जो एक कैंडल है उसका ओपन और क्लोज जो है लाइन चार्ट में स्पेशली जो है वो शो होगा, उसका हाई और लो जो है वो नहीं शो होगा। तो अगर आप इसको इस चार्ट पे आके देखें तो ये चीज़ नज़र आएगी आपको। इसको फर्दर नीचे ले जाएंगे तो और ज़्यादा आपको ये मूवमेंट नज़र आएगी। सो दिस इज़ द लेवल जहाँ पे वीकली क्लोजिंग्स हैं उन दो बॉटम्स की। वैसे बीच में मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है, नीचे आई है और कुछ घंटे कुछ दिन नीचे रही है। 8 अप्रैल को मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच किया। 9 अप्रैल, एक दिन के बाद वापस इस लेवल में गई और फिर 10 अप्रैल को वापस, और फिर 14 को 4 दिन के बाद में भी बीच में कोई एक आध वीकेंड भी आ गया और उसके बाद इसी चैनल में चल रही है मार्केट। अगर आप देखें तो इस चैनल को अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट जो है मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम में बिल्कुल मिड ऑफ द चैनल जो है वो चल रही है। तो मिड ऑफ द चैनल में अगर आपने किसी जगह पे एंटर होना है तो आप उसके अंदर ये ज़रूर देखें कि की लेवल्स अपने लाजमी लगाएं, की लेवल्स लगाएं बड़े टाइम फ्रेम पे, और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो उनको आपने कंफर्म करना है कि आपके पास जो कैंडल्स बन रही हैं वो कैंडल्स आपको जो है वो क्या बता रही हैं। उसके बाद आपने एंटर होना है। ओके, कौन है इस वक्त लाइव जो स्ट्रीम को देख रहा है? चैट सेक्शन में आप बताएं कौन है, किस पेयर पे आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, कितना एक्सपीरियंस है आपका, एनीथिंग यू फील लाइक शेयरिंग।
अच्छा, ये खास चीज़ है, ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं वो नॉट फ्रॉम द आउटसेट, कुछ बातचीत हमारी हो जाए, कुछ लाइव सेशंस हो जाएं, तो वो फिर हम साथ साथ जो है वो उस पर काम भी करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे कि वो क्या तरीक़ाकार है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि कुछ टाइम टेस्टेड जो हैं चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम किया, ढूंढा, काम किया, तो आप देखते हैं कि जी इसके अंदर विन रेशियो इतना हो जाता है कि आपकी जो लॉसेस हैं उनको और आपके जो विनिंग ट्रेड्स हैं उनको अगर कंपेयर किया जाए तो ओवरऑल आप जो है विन साइड पे होता है। तो उसमें अब ये नहीं कहा जा सकता कि जी आप ना मैं कहूँगा कि आप 90% जी ट्रेड्स विन करते हैं या 100% या 80%, लेकिन इतना है कि ओवरऑल आप जो है वो प्रॉफिट में ही रहेंगे, आप लॉस में नहीं जाएंगे, प्रोवाइडेड अगर वो जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्टली जो है वो काम किया जाए। तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन आफ्टर फ्यू सेशंस ऑफ दिस लाइव स्ट्रीम। तो अभी आई गेस इफ समवन इज watching this stream तो वो चैट सेक्शन में बता सकते हैं। नो बडी इज़ एक्टिव तो हम इसको वो आज के लिए क्लोज करते हैं, और कल जो है वो 5:30 पे या 6 PM पे इवनिंग में पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जो है उसके मुताबिक दोबारा फिर लाइव आएंगे। ओके, नाइटमेयर इज फ्रॉम पोलैंड। ओके, you would have hardly understood what I have said because I shifted from English to Urdu. Well, I'm trying to cope up with this thing, like interacting with you guys and working on my chart simultaneously because, as I have told you earlier, this is my first live stream. So it would take some time to adjust these things कि मैं आपसे बात भी करूं और साथ साथ जो है अपने चार्ट्स पे भी काम करूं। तो इस तरह पहले कभी किया नहीं है, लेकिन मे बी in one hour session or maybe in next few sessions इस चीज़ की आदत हो जाए कि यहाँ पे भी इंटरेक्शन हो और साथ साथ चार्ट्स पे भी काम जो है वो चलता रहे। आई गेस most of the audience have left, the audience has left, and now I guess it's time to say goodbye to you all. We'll come live tomorrow. I'll share the time on this channel, and you guys are most welcome. Thank you very much for giving your precious time. Yeah, I'll be try to be more interactive, and I'll try to
do something on the charts while talking to you guys. Uh, I'm not used to of it, but I'll try to do so uh, in the upcoming live sessions. Because in this live streaming and working on the charts, I guess I'm the novice right now. So see you guys tomorrow. We'll end this stream session here and we'll come live tomorrow at 5:30 or 6 in the evening. And before we end the session, if somebody is live and they want to say something, uh, you are more than welcome. The chat section is open for all of you. I'm here for 1 or more minute. So if you want to say something, uh, or you want to suggest something, अगर कोई ऑनलाइन है और वो कुछ कहना चाहता है तो चैट सेक्शन में वो बात कर सकता है, कोई सजेशन देना चाहे तरीकाकार के ऊपर या किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर तो वो भी बात की जा सकती है, आप चैट सेक्शन में बता सकते हो. थैंक यू वेरी मच सायरा शहीद एंड ऑल माय अपॉलॉजीज टू ऑल द ऑडियंस कि चीज़ें उस तरीके से नहीं कर पाए जो हम चाहते थे. रीज़न उसका यही है कि दिस इज़ द वेरी फर्स्ट लाइव सेशन जो मैंने किया है और बाकी अभी जो 3 और दोस्त हैं, बेसिकली दिस चैनल, दिस 4 ब्रोक फ्रेंड्स, ये हमारा एक पुराना चैनल है. अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन में भी जाके देखें तो प्रोबेबली कहीं 2015-2016 का, जिसके ऊपर बस हमारी रैंडम वीडियोस वैसे ही जो है वो भी कोई इतना ख़ास काम नहीं है. वो एक आपका लेयर टाइम जो होता है उसमें जो हरकतें आप कर रहे होते हैं उसकी में भी 5, 10, 15 वीडियोस या शॉर्ट्स जो भी होती हैं वो अपलोड की हुई होंगी. ये चीज़ जो है ये तवज्जो आपकी मांगती है. ये कहना कि जी आप जॉब भी करेंगे साथ ये काम भी करेंगे, बहुत प्रो लेवल पे अगर आप चल रहे हैं, आपने सीखा हुआ है और आपकी वो आप कह लें कि आंखें ऐसी हैं कि जो चार्ट देखते साथ ही मार्केट के मूव को पकड़ लेती हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, आपके लेवल्स कहाँ बन रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ पे बन रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप्स कहाँ पे हैं, इम्बैलेंस कहाँ पे है, रीबैलेंस किधर हो रही है मार्केट, ठीक है, न्यूज़ में क्या सुना है, क्या देखा है, वो सारी चीज़ें अगर आप वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप कर लेते हैं तो दिस मीन्स यू डोंट नीड आवर चैनल. आप प्रो हैं, आप फिर इधर आके हमें सिखाएं. हम तो खुद स्टूडेंट हैं. तो ये सारा काम करना और उसके साथ इंटरेक्ट करना, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं. तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो भी सेशन होते हैं उसके अंदर इनको हम साइमल्टेनियसली लेके चलें. तो आप लोगों ने जो टाइम दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का. तो आप लोगों से मुलाकात इंशाल्लाह होगी नेक्स्ट सेशन में. और अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल. टेक केयर. And I'm still figuring out how to close this session.